Okay, so 10 seconds left for round one of Facebook hacker ka. Looks like we got the problems. Let's read this one first. Here comes Santa Claus. So, is home to n elves, the ith of whom lives xi meters from the start of the lane. So we have n people और उनका positions है हमारे पास. As Santa's little helper, you are tasked to assign elves to work on toys for good little girls and boys. Specifically, you must assign each elf to work on some toy so that at least 2 toys get worked on and no elf works on a toy alone. क्या है ये? You must assign each elf to work on some toys so that at least 2 toys get worked on. Okay. And no elf works on a toy alone. ठीक है. All elves working on the same toy will meet at the point which minimizes the farthest distance that any of them would need to walk. Okay. Formally, if the elves assigned to a given toy live at some positions, then they will meet at point B. Just give me a minute, I should turn on my light. Okay. So they will meet at point P such that this is as small as possible. For instance, the first sample case is depicted below. तो we have these two elves, इनको एक टॉय असाइन हुआ, इन तीनों को एक असाइन हुआ और इन दोनों को एक असाइन हुआ. ठीक है. Santa is supervising and you reckon he could use some exercise. Among all valid assignments of elves to toys, what's the farthest Santa would need to walk to visit all meeting points? Santa may start and end anywhere but will try to walk as little as possible after seeing your assignment. Okay. कुछ अच्छे से समझ तो नहीं आया ये प्रॉब्लम, बट लेट्स सी. So we are discussing problem A. ठीक है. सबसे पहले तो n लोग हैं जो कहीं कहीं पे रहते हैं. अब हमें इन लोगों को टॉयज असाइन करने हैं. राइट. यू मस्ट असाइन ईच एल्फ, है ना, ईच एल्फ टू वर्क ऑन सम टॉय. So that at least 2 toys get worked on. अच्छा, at least 2 toys को चाहिए भी है. Okay. And no elf works on a toy alone. All elves working on the same toy will meet at the point which minimizes the farthest distance that any of them would need to walk. Formally, if the elves assigned, then they will meet here. Now Santa is supervising and you reckon he could use some exercise. Among all valid assignments of elves, what's the farthest Santa would need to walk to visit all meeting points? Santa may start and end anywhere but will try to walk as little as possible. ठीक है. तो एक बार इनपुट को देखते हैं थोड़ा समझने के लिए. For the ith followed by like a single real number, the farthest distance Santa would need to walk in meters. Your answer will be considered correct if it differs. Okay.
In the first sample case, oh, are we given any sample case? No. Okay, after, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 7 पोजीशंस हैं, राइट, जो कि ओके, तो फर्स्ट सैम्पल केस को अगर अपन डिस्कस करें ना, तो हमारे पास बेसिकली एक ऐसे एक रोड है, राइट, और उस पर 1 फिर 3, ठीक है, फिर आई गेस 7, फिर 12, 13, 17 एंड 23 है ना, आई गेस 3 6 और एक 7 लोग हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें अब अपन को करना क्या है, यहाँ पे लोग हैं, है ना, इन पोजीशंस पे, और इनको टॉय असाइन करना है। ओके, और सिंस हमारे पास 4 लोग से ज़्यादा ही होंगे तो हाँ, एटलीस्ट 2 टॉयज तो वर्क करवाएंगे ये अपन, ठीक है। अब इसमें अपन करेंगे क्या, बेसिकली एटलीस्ट 2 टॉय देना है, मतलब तुम ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे एक टॉय दिया और इन तीनों को बोल दिया तुम लोग काम करो। यहाँ पे एक टॉय दिया, इन सबको बोल दिया तुम लोग काम करो, ऐसा कुछ, राइट। ओके, सो हमें बताना ये है कि among all valid assignments, what's the farthest Santa would need to walk, visit all meeting points? Okay, in the first sample case, elves living at 1 meter and 3 meter will work on a toy. तो अगर ये दोनों एक टॉय पे काम कर रहे हैं, ये दोनों, ठीक है, then elves living at 7, 12 and 13 will work on a toy. Okay, and elves at 17, 23 will work on a toy. अब जब तुमने टॉय असाइन कर दी है ना, तो उसके बाद तुम क्या करोगे बेसिकली कि ऑल एल्व्स वर्किंग ऑन अ सेम टॉय विल मीट एट द पॉइंट व्हिच मिनिमाइजेस द फारदेस्ट डिस्टेंस दैट एनी ऑफ देम वुड नीड टू वॉक। तो यहाँ पे अगर तुम 1 पे खड़े हो गए तो 2 करना ही है, ठीक है, तुम क्या बोलोगे, तुम बीच में खड़े हो जाओगे, राइट। अगर 2 लोग हैं तो सबसे बढ़िया यही होगा कि बीच में खड़े हो जाओ। और अगर 3 लोग हुए तो देखो कितने भी लोग हों, ऐसे एक बात समझो, जो मीटिंग पॉइंट होगा बेसिकली लेट्स से P1 यहाँ पे है, P2 यहाँ पे है, P3 यहाँ पे, P4 यहाँ पे, P5 यहाँ पे। अब मेरा कहने का ये मतलब है कि जो जो भी मीटिंग पॉइंट होगा ना, वो बेसिकली या तो इससे एक्सट्रीम में होगा या फिर इससे एक्सट्रीम में होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर मीटिंग पॉइंट यहाँ पे है तो ये एक्सट्रीम हो गया, यहाँ पे है तो ये एक्सट्रीम हो गया, है ना। सिमिलरली बीच में भी है कहीं पे, तो या तो इससे दूर होगा या इससे दूर होगा, तो बेसिकली इन दोनों से शायद बीच में ही लेना पड़ेगा पॉइंट, राइट। कितने भी लोगों फर्क नहीं पड़ता, दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो अब ऐसे सोचो कि ये दोनों जो है वो 2 पे मिल रहे होंगे, ठीक है, दिस इज द मीटिंग पॉइंट। फिर 7 और 13 जो है वो 10 पे मिल रहे होंगे, राइट, या, एंड दीज टू विल बी मीटिंग एट 20। तो बेसिकली 2 से 20 तक जाना होगा सेंटा को, एंड विच इज 18 डिस्टेंस, दैट्स व्हाई द आंसर इज 18, राइट। The toys will be made at these respectively. Santa would need to walk at least in total to visit every meeting point. तो हमें Santa is surprising among all. What's the farthest Santa would need to walk? मतलब तुम्हें सबसे ज़्यादा वाला बताना है, राइट। सबसे ज़्यादा तो तभी आएगा ना, देखो। ओके ओके, सबसे ज़्यादा वाला बताना है तुम्हें, that Santa needs to walk. ओके, तो क्या इसका मतलब यही है कि हम फर्स्ट 2 लोग को लेंगे और लास्ट 2 लोग को लेंगे और इनका जो भी आंसर होगा वही फारदेस्ट होगा, राइट। क्योंकि अगर तुम ऐसे सोचो,
हाँ मतलब बेसिकली जो भी मीटिंग पॉइंट्स होंगे ना, तुम तो ऐसे सोचो, लोग हैं, अब ये मीटिंग पॉइंट 1 है, ये मीटिंग पॉइंट 2 है, ये मीटिंग पॉइंट 3 है, ये मीटिंग पॉइंट n है या x है। अब बेसिकली सैंटा को कितना चलना होगा, वो m1 से mx तक ही जाना होगा। तो तुम ये चाहोगे कि m1 जो है एज लेफ्ट एज पॉसिबल हो और mx जो है एज राइट एज पॉसिबल हो। तो इसका यही मतलब होगा ना कि जब जो तुम्हारे पर्सन्स हैं बेसिकली एल्व्स हैं, विच इज e1 e2 e3 e4, है ना, ex-1 एंड ex, तो तुम यही बोलोगे ना कि सबसे राइट मोस्ट पॉइंट तो यही आएगा, है ना, और सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट यही आएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दोगे तुम। दैट्स व्हाट आई फील। लेट्स ट्राई विथ ऑल लाइक द सैम्पल इनपुट्स। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अकॉर्डिंग टू माई लॉजिक पहला मीटिंग पॉइंट होगा 1.5 पे, दूसरा मीटिंग पॉइंट होगा 4.5 पे। तो फारदेस्ट कितना जाना पड़ेगा? ओ वेट, अच्छा यहाँ पे ये इश्यू हो जाएगा ना कि 3 को अकेले नहीं छोड़ सकते तुम। ओके ओके, तो अगर 5 लोग हैं तो थोड़ा सा आई गेस सोचना पड़ेगा, अदरवाइज ग्रेटर देन 5 होंगे ना, तो देखो 4 लोग भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट 5 लोग होंगे तो तुम्हें इसको या तो इनके साथ लेना पड़ेगा या फिर इनके साथ लेना पड़ेगा, राइट। तो अगर इसको तुम इनके साथ लेते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट 2 बनेगा और तो फिर वो 2.5 आएगा, है ना। बट अगर तुम 3 को इनके साथ लोगे 1 2 3 4 5, तो फिर एंडिंग पॉइंट ये बनेगा विच इज़ 4 एंड स्टार्टिंग पॉइंट 1.5 बनेगा विच इज़ अगेन 2.5। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम 3 को किसी के भी साथ ले सकते हैं और इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंसेस एज वेल। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो अब इसमें ऐसे सोचो कि लेट्स से यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, यहाँ पे P3 है, यहाँ पे P4 है और यहाँ पे P5 है, ठीक है। तो अगर तुम P3 को इन लोगों के साथ लेते हो तो तुम्हारा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा P3 प्लस P5/2, है ना, विच इज़ द मिड पॉइंट। अगर तुम ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करते हो तो ये दिस इज द मिड पॉइंट 1 माइनस राइट द मिड पॉइंट 2 विच इज P1 प्लस P2/2, दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है। और अगर तुम दूसरा केस लेते हो, दिस इज द केस 1, और अगर तुम दूसरा केस लेते हो which is basically P1 P2 P3 P4 P5, और अगर तुम P3 को इनके साथ लेते हो तो तुम्हारा बेसिकली आंसर क्या होगा, P5 प्लस P4/2 माइनस P3 प्लस P1/2, है ना। तो इस केस में आंसर क्या आएगा यार, P5 प्लस P4 माइनस P1 माइनस P3, और इस केस में आंसर क्या आएगा, P5 प्लस P3 माइनस P1 माइनस P2/2। तो सिंस दोनों ये जो है वो अलग अलग है, राइट, क्योंकि इसमें P5 तो चलो सेम है ना, माइनस P1 भी सेम है, बट इसमें P3 है, इसमें और इसमें P4 है, इसमें P2 है ना, तो दोनों का आंसर डिफरेंस आएगा। तो ये तुम्हें चेक करना होगा आई गेस, ठीक है। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, है ना। अब अगर 4 लोग हैं तो बेसिकली सिंपल है ना, 4 लोग हैं तो कुछ नहीं करना है, लेट्स से 10 100 1000 और जो भी है ये 10,000, राइट। तो इनके बीच का पॉइंट विच इज 110/2 और इनके बीच का पॉइंट विच इज लाइक 10,000 है ना, तो 11,000/2 हो जाएगा। इन दोनों को जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई गेस यही आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव टू डू हियर, है ना। तो लेट्स डू इट। तो बेसिकली वी नीड फर्स्ट लाइन में टेस्ट केस है, देन वी हैव इंटीजर्स, ठीक है। सो लेट्स टेक x एज द array name. Now we need to take the input. So for int I less than n, I plus plus, c in x of I,
ठीक है। अब अगर n is 5 देन इट्स अ डिफरेंट केस, ठीक है ना, तो इट्स अ डिफरेंट केस, ठीक है। तो अगर n 5 है तो यू विल कंपेयर दीज टू रिजल्ट्स, राइट। फर्स्ट रिजल्ट इज दिस एंड सेकेंड रिजल्ट इज दिस, है ना। देखो फर्स्ट रिजल्ट क्या होगा, P4 प्लस P5 बाई 2 माइनस P1 प्लस P3 बाई 2 विच इज P4 प्लस P5, राइट। तो if n is 5, so result 1 which is a double R1, right, result 1, it will be P5 plus P4 which is x of 4 plus x of 3, this is zero based indexing, right, minus x of 0 minus x of 2, right, है ना। तो इसको तुम एक काम कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज इंट you can make it a double, right, so that you don't have to face any difficulty by 2, ठीक है। this is result 1। R2 will be, R2 क्या हो जाएगा, अगर तुम ये वाला केस डिस्कस करते हो तो P3 plus P5, so P3 plus P5, so x4 plus x of 2 minus x of 0, है ना, minus x of 0 minus x of 1 by 2, ठीक है। and you will say double ans, है ना, which is like 0, and here ans will be max of R1 and R2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम 18 की जगह 18.0 वगैरह प्रिंट कर देंगे तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, हम ऐसा प्रिंट करेंगे नहीं एक्चुअली, ठीक है। और मे बी यू कैन सी आउट आंस हियर, है ना, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एंड यू कैन रिटर्न, right, yeah, otherwise, oh, first you need to sort this array also, right, sort x dot begin, x dot end, otherwise what we need to do is कि हमारा जो आंसर होगा वो otherwise क्या होगा, जनरल केस में हमारा जनरल केस में आंसर होगा लाइक Pn प्लस Pn माइनस 1 बाई 2 माइनस P0 प्लस P1, और सिंस आई एम टेकिंग वन बेस्ड इंडेक्सिंग तो P1 प्लस P2 बाई 2, है ना। This is what our answer will be. So our answer will be basically x of n minus 1 plus x of n minus 2 minus x of 0 minus x of 1 whole divided by 2, ठीक है। And then we need to print this answer. So let's check if we are doing it correctly. Yeah, we are getting the correct result. तो अभी अपन को करना क्या होगा यार, एक्चुअली में इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से सबमिट करना होता है। आई थिंक ये दबाएंगे तो 6 मिनट का टाइमर वाइमर शुरू हो जाता है, राइट। तो डाउनलोड दिस प्रॉब्लम्स वैलिडेशन इनपुट, दिस फाइल कंटेन्स अ स्मॉल सबसेट ऑफ टेस्ट केसेस, डाउनलोड वैलिडेशन इनपुट। ओह, मुझे याद था कि 6 मिनट का कुछ टाइमर वगैरह भी होता है, बट ऐसा नहीं है। अब अपलोड द आउटपुट फाइल, अच्छा, ओके, सो we got a downloaded file which is this, okay, here comes Santa Claus, right, so g plus plus a dot cpp and dot slash a dot out, here comes Santa Claus। इसको हम एक काम करते हैं, output underscore a डॉट txt में भेजते हैं, ठीक है। कैन नॉट ओवर राइड एग्जिस्टिंग फाइल, अच्छा, अभी कैन वी डू दैट, throwing an instance of bad alloc, okay, why, dot slash a dot out, here comes valid Santa, terminate after throwing instance of bad allocation,
Okay, and what is this? Should we print this thing? Or set precision in C++? I think ये E ऐसे तो नहीं करना चाहिए हमें. Set precision. मतलब हमें ऐसे तो प्रिंट नहीं करना चाहिए, राइट? ऑब्वियसली 10⁸ ऐसा कुछ तो प्रिंट नहीं करना चाहिए हमें. हमें पूरा लाइक वैल्यू प्रिंट करना चाहिए मेरे ख्याल से. ओके, लेट्स सी यार कि एक्चुअली में इस फाइल में ऐसे ऐसे क्या चीज़ें हैं. वी हैव दिस 1000 देन 50,000. So what's wrong in here? Why we are getting bad allocation? Um, Terminate after throwing an instance of bad allocation. Oh, I understood. Is it not allowing debug n? Let's see what is n every time. N is 50,000. Okay, n is this much big. It is too much, right? Okay, there are 12 cases. So if n is this much large, how are we able to solve this problem? n कहाँ तक हो सकता है? n 10⁵ तक हो सकता है. Okay, announcement has been posted. Okay. अगर n 10⁵ तक ही हो सकता है तो फिर हमारे पास n इतना बड़ा कैसे आ रहा है? This input file is very large, it looks like. Oops, my system is hanging. Wow, there is 50,000 entries in here. What am I missing? So test cases, n is up to 10⁵, x is up to 10⁹, and okay, let's take integer maybe. Right, vector int integer, and what we can do here is we can make this guy double. We can make this guy double. Right? Let's see if it works now. No, it is not working. I don't really understand कि basically case 10 जो है वो 50,000 है. उसमें हम आंसर ये प्रिंट कर रहे हैं, which is not correct according to me. We should print the entire thing, right? How to print the entire double value in C++? With full precision. I think standard format
will do this work for me. Standard format. Oops, format is not a standard. In C++ 20, right? I don't know which version I'm using. Or maybe we can print it like set precision thing, right? Yeah. So set precision of, let's say, 15. Yeah, now I think it is good. It is good now, है ना? But still output is good, but still अगर n इतना बड़ा है तो फिर कैसे होगा? n इतना बड़ा कैसे हो सकता है यार, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है. Is there any problem with the file? I don't really understand यार कि ये इसका submission कैसे काम करता है, because it's been a long time I haven't have participated in FB Hacker Cup. Like if n is this much large, there is no way I can solve this problem. But why you are passing like this much large value, yaar? What's wrong with you guys? Let's try to remove these lines to check what we are getting actually. Oops, looks like 50,000 is the last one, right? Is it, does it mean that we don't have enough inputs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then set number maybe. Acha, okay, this is 21st line, this is 22nd line. Okay, and there is no line after that, right? Oops. It's like there is some issue with the input file. Should we download it again? Yeah, let's download it again maybe. It looks like some issue. Experiencing so many submissions that some appear to be failing. If you get an error when trying to upload your source code, please make a clarification request. Instead that include both your source code and output for the problem you are unable to submit to. Okay, I downloaded it again. ./a.out, or maybe you should do g++a.cpp, and then ./a.out, or you can directly do ./test. Here comes this. Oh my god, this is working now. Why my ./test is working? g++a.cpp ./a.out. What? Looks like कि फाइल में कुछ चेंज है पक्के से. Set number. Let's see. Hey, what the heck? 1, 2, 3, 4, 5, 6. अच्छा, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अरे पहले वाली फाइल में मेरे कुछ इनपुट्स मिसिंग थे यार, पता नहीं क्यों. Shit. What is this? Okay, no worries. So we have this and we should do this. Cannot overwrite existing file. Why?
why you are doing this with me? Um, remove output and then do it again. Yeah. So, okay. Looks like we need to remove this debug statement first. Okay. Now, copy this input. यार काफ़ी मतलब लोचा है पे फेसबुक हैकर कब मैं इजी नहीं है इसको सबमिट करना काफ़ी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं है ना रिमूव आउटपुट देन डॉट स्लैश और मे बी मैंने सही से मैंने कुछ देखा नहीं ना इसको कैसे सबमिट करते हैं दैट्स व्हाई आई एम फेसिंग दिस मच प्रॉब्लम राइट ठीक है तो फाइनली वी गॉट द आउटपुट नाउ वी नीड टू इंसर्ट दिस आउटपुट राइट सो एंड देन वैलिडेट एरर परफॉर्मिंग क्वेरी व्हाट इज दिस यार what is this why error performing the query output a validate what is this error performing the query why I am getting error performing the query how to ask for clarification how to ask for clarification how can I ask for the clarification please I don't know why my clarifications right general it's while validating the output file I am getting what's the error that we were getting let's see so validate solution output underscore a dot txt validate something went wrong error performing query I'm getting error performing query है ना we can like paste this screenshot also we can copy paste here yeah good confirm let's see while validating the output file I'm getting ठीक है so the point is कि हम A को सोच लिए हैं but हम सबमिट नहीं कर पाए है ना and it looks like कि काफ़ी लोग सबमिट नहीं कर पा रहे हैं because we are still 301 right yep people solved B1 first looks like okay and very few people have solved it ठीक है तो let's move to problem B है ना and we will come again here like to submit A after some time so now we are discussing problem B ठीक है अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें अपन को अगर क्वालिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा To advance to round 2, you must place amongst the top 5,000 contestant. तो मेरे ख्याल से अगर हम लाइक फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर देंगे ना तो हम टॉप 5,000 में आ जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है चलो लेट्स सी तो दिस प्रॉब्लम शेयर्स सम सिमिलैरिटीज विद B2 with key differences in bold. Okay, so given a positive integer p, please find an array of at most 100 positive integers which have a sum of 41 and a product of p or output -1 if no such array exists. Wow, very straightforward problem it is. B2 भी हम खोल के रखते हैं. Is anybody else like facing this issue? Let's see on code forces. Yep, it looks like people must be
getting this issue. Yeah, error performing query. Yep. Is anyone else having problem? Me too. Broken servers. Are samples not loading for anyone else? Sample input and output just disappear. Oh my god, there are too many problems. It shows, yeah, that's what I was facing. It shows that 12 validation test cases in problem, but only 11 cases seen. Right? I got a file with only 7 cases. Yeah, and it has at least 5 blank lines left. Yep. Something went wrong, error performing query. Looks like a lot of people are having problems, right? Looks like I'm repeatedly getting sorry, something went wrong. We are working on getting this. Go back, whoever. Yup. Guess layoff really hurts everyone. Oh my god. This is too much, right? It's not happening. How about making it 24 hours when it's not too late? Lol. Really? Chalo, it's fine. We can focus on problem B, right? Instead of wasting time. तो हमें करना क्या है, हमारे पास P दिया हुआ है. Please find an array of at most ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं उसमें, which have a sum of 41, like exact sum चाहिए क्या तुम्हें 41 and a product of P or output -1 if no such array exists. If multiple such array exist, you may output any one of them. Interesting. So the input format is like test cases and then integer P. Or what is the problem in B2? So if multiple such arrays exist, print one with the fewest number of elements. Okay. तो बेसिकली हमें कुछ P नंबर दिया हुआ है और हमें एक एरे बताना है जिसमें एटमोस्ट 100 लोग होंगे जो कि पॉजिटिव इंटीजर का होगा. ओह, अगर पॉजिटिव इंटीजर का है तो उसमें एटमोस्ट 100 लोग तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर इज 1 एंड 41 का सम चाहिए तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 41 लोग को ले सकते हो, राइट? करेक्ट. Okay. So if multiple search, you may output any one of them. So now again samples are not loading for us. Oh my god, samples are not loading. Is samples loaded? Here, nope, we cannot see the samples. Wow, very good. देखो इसमें सबसे पहले तो क्या है कि तुम्हें कुछ भी P दिया हुआ है, राइट? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दे दिया 2023 SP. अब तुम्हें करना क्या है बेसिकली कि तुम्हें कुछ लोग बताने हैं, राइट? लेट्स से तुमने बताया A1, तुमने एक एरे दे दिया A1 A2 A3 A4 A5 का, ठीक है? ऐसे करके तुमने 5 लोग दिए, चलो, है ना? अब इसमें होना क्या चाहिए कि इनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है? और जो इनका सम होगा, राइट, जो इनका समेशन होगा वो एग्जैक्ट 41 होना चाहिए. अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर तुम्हें एग्जैक्ट 41 समेशन चाहिए है ना, और लेट्स से कि तुमने जो सोल्यूशन मुझे दिया, तुम्हारा जो समेशन है वो कम आ रहा था, लेट्स से तुम्हारा समेशन जो है वो 39 आ रहा था, ठीक है ना? तुमने कुछ चीज़ें दी मुझे यहाँ पे, लेट्स से 13 दिया, 13 और लेट्स से तुमने 13 10 2 और 2 दिया, लेट्स से दिस इज 9, तुमने ऐसा कुछ दिया लेट्स से. तो इसका जो समेशन आएगा वो बेसिकली 39 आ रहा है, बट मुझे तो 41 चाहिए. तो मैं क्या करूंगा ना, मैं अपने एंड से 2 1 ऐड कर दूंगा इस एरे में. उससे क्या होगा, प्रोडक्ट तो चेंज होगा नहीं और समेशन जो है वो 39 से 41 बन जाएगा, राइट?
तो द मेन ऑब्जर्वेशन हियर इज कि वी कैन ऑलवेज ऐड 1, है ना, वी कैन ऑलवेज ऐड 1, ठीक है, टू मेक द सम 41 अगर हमारा कम लाइक आ रहा है तो, राइट, वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट, राइट, ओके। कूल, है ना। तो अभी हमें आ गया समझ में, ठीक है। अब अपन क्या करें इसमें, लाइक हमें तो सम 41 बनाना है, राइट। तो अगर हमें सम 41 बनाना है तो सबसे पहले तो मुझे मिनिमम सम वाला कोई भी एरे लाके दो, राइट। एंड सिंस ये 10 टू द पावर 9 तक ही है, तो अगर तुम पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 नहीं है वो ले रहे होगे तो तुम क्या ले रहे होगे, 2 ले रहे होगे, राइट। तुम कितने 2 ले पाओगे जब तक वो 10 टू द पावर 9 ना बन जाए, 30 के आसपास, राइट। 2 टू द पावर 30 क्या होता है, 10 टू द पावर 9 से बड़ा होता है। तो अगर तुम सिर्फ 2 भी ले रहे हो ना तो तुम 32 ही ले पाओगे, मतलब 30, विच इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि तुम्हें 41 ही सम बनाना है। तो तुम 2 भी अगर ले रहे होगे ना तो तुम 20 से ज्यादा 2 नहीं ले सकते, राइट। एटमोस्ट 22 ले सकते हो, उसके बाद तुम एक 1 ऐड करोगे, और 21 से ज्यादा जो है बेसिकली तुम साइज ले नहीं सकते, राइट। एक बात अलग है कि अगर प्रोडक्ट 1 है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट 1 चाहिए तब तो ठीक है, तुम 41 वंस ले सकते हो, राइट, 41 साइज आएगा उस केस में। बट अगर प्रोडक्ट 1 नहीं है और तुम्हें मैक्सिमम साइज अगर चाहिए होगा तो मेरा मानना यह होगा, साइज ऑफ एरे मैं बोल रहा हूं, तो वो 21 से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। एग्री कर रहे हो ना मेरी बात से? आई गेस, ठीक है। अब अपन ये सोचते हैं यार, अपन तो B1 को पहले सॉल्व करने का सोचते हैं, राइट। किसी तरह भी एक एरे दे दो मुझे जो कि क्या बोलते हैं, जिसका प्रोडक्ट एटलीस्ट ये हो, है ना, और उसका सम जो है वो कम से कम हो। क्यों सम में कम से कम क्यों मांग रहा हूं तुमसे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि सम 41 से ज्यादा ना हो जाए, कम होगा, लेट्स से 36 है, तो मुझे पता है ना 36 से 41 कैसे बनाना है, मैं 1 ऐड कर दूंगा 5, राइट। तो मुझे वी नीड टू फाइंड, है ना, वी नीड टू फाइंड a array such that the product is P, product of it is P, product is P, and the sum is minimum possible. अब ये कैसे बनाएंगे अपन, तो अगर अपन 2023 के फैक्टर्स देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, 2023 में ही आ जाओ तुम। तो 2023 के फैक्टर्स, है ना, तो फैक्टर्स ऑफ 2023, ठीक है, 2023 के फैक्टर्स ये सब है, ठीक है ना, मतलब बेसिकली 1 इंटू 2023, है ना, फिर 7 इंटू 289, फिर 17 इंटू 119, है ना, ऐसे करके हैं, ठीक है, राइट। तो क्या मैं इनमें से कोई ऐसे ही फैक्टर ले लूंगा क्या, मतलब 2023 में आंसर पॉसिबल तो है ना भाई? हाँ पॉसिबल तो है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये ले लूंगा क्या कि चलो ये दोनों लोगों को ले लूं? नहीं, इसमें तो सम इनका बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट, 41 से ज्यादा ही हो जाएगा ना, इन दोनों का जब तुम सम करोगे तो 2024 हो जाएगा वो। सिमिलरली इनको भी नहीं ले सकते, इन दोनों को भी नहीं ले सकते, राइट। मुझे तो मिनिमम सम चाहिए। अब मिनिमम सम किसी चीज से कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लो 17 और 119। अब लेट्स से अगर ये प्राइम है तो अलग बात है, क्योंकि वो टूट नहीं सकता, बट अगर प्राइम नहीं है तो क्या हमें इसको तोड़ना चाहिए? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि लेट्स से अगर तुम किसी भी नंबर को तोड़ते हो, राइट, फॉर एग्जाम्पल तुमने 4 को तोड़ा 2 इंटू 2 में, तो इन दोनों का जो समेशन है वो 4 के बराबर है, विच इज गुड,
अच्छा, अगर मैं 2 into 3 को देखता हूं, फॉर एग्जाम्पल 6, तो क्या मुझे 6 को तोड़ देना चाहिए? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि जब तुम 6 को तोड़ दोगे तो इनका जो समेशन है वो 6 से छोटा हो जाएगा, राइट, विच इज 5। तो 6 को तोड़ने में भलाई है, क्योंकि तुम्हें तो मिनिमम समेशन चाहिए ना, तुम 6 को तोड़ दोगे, राइट। कहने का ये मतलब है कोई भी नंबर हो, अगर वो टूट सकता है तो उसको तोड़ दो, राइट। तुम कोई भी नंबर ले सकते हो बेसिकली, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे सोचो कि कोई भी नंबर है, लेट्स से वो इवन है ना, तो लेट्स से 40 है। अब ऑब्वियसली तुम इसको 2 into 20 में तोड़ सकते हो, राइट। और 2 into 20 जो है, जब उनको तुम ऐड करोगे तो वो 22 आएगा, विच इज लेस सम ऑब्वियसली, है ना। तो कहने का ये मतलब है जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ो, और जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ो से मतलब ये होता है कि तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे तो उससे ज्यादा टूट नहीं सकता ना, कोई भी नंबर, सब नंबर अगर प्राइम हो गए, अब वो उससे ज्यादा क्या ही टूटेंगे, राइट। तो अब अगर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 119 देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 119, है ना, तो 119 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 7 into 70। तो ये तो प्राइम है ही खुद, 7 into 17 is the prime factorization of 2023, and since it is a prime factorization I can say कि यही मिनिमम सम पॉसिबल होगा एरे का, ठीक है। तो अब जब तुम उनको ऐड करोगे इट विल कम आउट एज 34 एंड 7। तो सिंस ये तो ऑलरेडी 41 बन रहा है तो देयर इज नो नीड टू ऐड एक्स्ट्रा वंस, समझ गए? अदरवाइज वी विल ऐड एक्स्ट्रा वंस। तो इस प्रॉब्लम में हमें ये करना यही है, द फर्स्ट स्टेप इज कि तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, p को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। लेट्स कॉल इट दिस एरे विच इज p1 p2 p3, है ना, दिस इज कैपिटल P। उसको तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिया। नाउ टेक द सम। अब तुम सम ऑफ इज दिस प्राइम फैक्टराइजेशन का सम लो। इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 41 देन आंसर एग्जिस्ट, else no, answer cannot exist, right, don't exist, ठीक है ना। ओके सही है। और अब सिंस अगर आंसर एग्जिस्ट करता है तो लेट्स से यू नीड टू ऐड whatever the sum is 41 minus sum of pi ones, you need to add this much ones to the array, that's what, है ना। तो अभी हम a को सबमिट करके देखें क्या, तो दैट्स व्हाट द सॉल्यूशन इज फॉर b1 एटलीस्ट, है ना। तो did we get anything? Validate solution, choose file, output underscore a, validate. Okay, looks like it is happening. Now अब क्या नाटक है? Your solution is correct for the validation input, so you may now make an official submission. अच्छा, start by downloading the password protected full input of this problem, which is a zip file only accessible with the password. अच्छा, get the password to access. ओके, तो ये अब डाउनलोड कर लिया अपन ने। अब अपन को करना क्या होगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, राइट। तो अब इसको एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? which may require software such as 7zip. If you are using, please see FAQ for more details. You will be given the option to directly download the input file in case you have trouble with the zip file. Why do you want us कि zip file हो, unzip करो, ये करो, वो करो? Get the password to access the password predicted full input. Once you get the password, you will have 6 minutes to unzip the input, run your code on it and upload. You need to download this 7zip. Okay, do we require password to extract this? Let's see, like let's try to extract it here only, na. Extract here, archive manager, yes, we need this. Okay, it requires a password. Looks like we can there is no need to download any software, we can do it with the existing functionality in Ubuntu, ठीक है। we don't need to require this, like अब हम क्या बोलेंगे कि डाउनलोड पासवर्ड एंड स्टार्ट टाइमर, राइट। तो चलो लेट्स डू इट। पासवर्ड इज दिस
Let's try to extract here, archive manager. Okay, yep, it extracted. How can we save this file now? Can we save this file? Don't know. This is loading here. We don't want loading, right? Can you extract it? How can you extract it? Extract here. Password are not yet. The list contains application that can open files. Extracted. Where did it extracted? Open. Extract. Yeah, we want to extract it here only. And extract. Password we have. Okay. Okay, I think the extraction is done. Yeah, validation input and input. So what do we want? Do we have the validation input, right? So okay, how much time do we have? What we need to do is output file or ठीक है. So basically this is the file है ना. अभी सबसे पहले तो आउटपुट ए को रिमूव कर दो. अब एक काम करो ./a.out करो. इसमें here comes सेंटा क्लॉज का input.txt फाइल डालो और output_a.txt में इसको लिख दो, राइट. अच्छा ओके. या एक काम करो ./test remove this ./test. Here comes वो output_a.txt. I think now it is correct है ना. अगर अपन output_a.txt को देखें, oh my god, this is the same output file यार. Input.txt, but we have 20 inputs here, but we have 12 inputs only here. What is this? Looks like we are doing it with the validation input. No, we need to do this. So vim a.cpp, ठीक है. ./test. Here comes Santa Claus input.txt, ठीक है. इसको output_a.txt में लिख दो. Let's see, we should have 20. हाँ, this is the file. अब तुम्हें करना क्या है? Drag and drop, choose. This is the output file. Okay, this is output_a. This is the input or basically the source code, and we should submit it, right? A.cpp, and yeah. Oops, an error occurred on our end while processing. Please try again. Are you mad or something, bro? Like, what is this here? Output a.cpp. Please submit it, man. What is this, man? Oops, an error occurred. What should we do? We're experiencing so many that appears to be failing. If you get an error when trying to upload your source code, please make a clarification request instead that includes both your source code. Data system is recovering. Please submit normally if you are able to. Ah, wow, what is this? Yeah, so much time waste. Output a.cpp. Submit it, please. What is this? Should I create a clarification request? How to get a clarification? Request clarification in problem A. I'm not able to submit the solution and the timer is about to expire. I am attaching the files. So A, and we need this.
What is this, man? This is very bad. I mean, it's not able to submit my solution. I'm not able to submit it. The timer is about to expire. Ah, wow. We refresh it. Let's try again one more time. Submit, please. No, it is not able to submit. Let's see if Codeforces has anything to say here. Same, it's quite frustrating. No problems. Same here, exactly. Question looks like validates. 4 hours round 1 previous years was good for reducing. What is this, man? Only choice is aborting the round. Probably today is gonna be a great day. I think we are all advancing to round 2. Hopefully they can resolve. We all got a literally buy from the system. Oh, what is this, man? What is this, man? Like, I was not able to submit my solution for problem A. The timer expired. What is this here? I mean, literally, like, what is this? Should we try submitting B1? Maybe. So as we already discussed that in B1, we should find the prime factorization of the number, right? Now, how you can find the prime factorization very fast of number? You can find prime factorization of very fast using sieve, right? So yeah, I think that's what ना sieve से हम prime factorization बहुत fastly पता कर सकते हैं, and that's what we need to do here, है ना? B1 is clear. Let's go back to B2. तो B2 में एक्चुअली में क्या करना है कि if multiple such arrays exist, print one with the fewest number of elements. If there are multiple with the fewest number of elements, you may print any of them. अच्छा, so now you want the fewest number of elements, right? That's interesting, isn't it? So now let's say if you have like something like this, let's say 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5 into 7, something like this, right? So कितना हो गया ये? Into 7 into you have also 1 3 है ना, फिर 11 into 11 ऐसा कुछ कुछ है, ठीक है? तो इसका सम क्या हो गया? 4 then 10 20 34
ठीक है 34 एंड देन यू हैव लाइक वंस, तुमने वंस ऐड करोगे ऑब्वियसली तुम, राइट, यू हैव टू ऐड सी नो नो, ठीक है ये हो गया। अब तुम ऐसे सोचो कि अब अपन को क्या करना है ना, इनको क्लब करना है बेसिकली, तो 2 और 2 को तुम 4 बना सकते हो फॉर श्योर, राइट, 2 और 2 को 4 तो बना ही सकते हो, देर इज नो नथिंग वी आर डूइंग, मतलब सम चेंज नहीं होगा उससे, है ना, तो इसको 4 बना सकते हैं, ठीक है। फिर 2 और 3 को तुम 6 बना सकते हो क्या, वो सब प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें, राइट, ओके। तो बेसिकली हम चाहते क्या है अभी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग कन्वर्ज हो जाएं, राइट, 2 और 2 को तुम 4 बना सकते हो, देर इज़ नो प्रॉब्लम। तो 2 और 2 को क्लब करना चाहिए या 2 और 3 को क्लब करना चाहिए, 2 और 3 को क्लब करोगे तो यू विल गेट 6 विच इज़ लाइक 1 एडिशन टू द सम, राइट, देर इज़ नो पॉइंट of clubbing 2 and 3 right now obviously। 2 और 2 को 4 करोगे, ठीक है, अभी भी सम सेम ही है, सम अभी कितना चल रहा है, 4 and 6 10 20 34, ठीक है, तो यू हैव लाइक 7 का फ्रीडम है अपने पास, ओके, देन 3 into 3 into 5 into 5 into 7 into 7। अब अगर हम 4 को यहाँ पे भेजें, बेसिकली 4 यहाँ पे, तो सबसे सबसे दो छोटे नंबर्स को ही मिलाने में हमारा फायदा है, राइट, या आई दैट्स व्हाट आई गेस व्हाई, बिकॉज लेट्स से अगर तुम 3 और 3 को मिलाते हो या 3 और 5 को मिलाते हो, तो यहाँ पे बेसिकली तुम कर क्या रहे हो कि हाँ करेक्ट करेक्ट, सबसे दो छोटे नंबर्स को ही तुम मिलाते जाओगे। 3 और 3 को हम मिला सकते हैं क्या, तो 3 का एडिशन हो जाएगा, मैंने बोला मिला दो, एक काम करो, तो अब हो गया 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 7, और तुम्हारा जो सम है वो 37 हो गया, राइट, 3 ऐड हो गए ना, बेसिकली 3 इंटू 3 9 होता है, तो 9 आएगा यहाँ पे एक्चुअली में, तो 9 आ गया। अब तुम किसी को मिला सकते हो क्या यहाँ पे, तो 4 और 5 को मिलाने से रहे हम, है ना, क्योंकि उससे तो हमारा जो सम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट, 11 से बढ़ जाएगा, तो हम अब कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, दिस इज व्हाट द स्मॉलेस्ट एरे वी कैन गेट, दैट्स व्हाट आई फील। आई एम होपिंग कि ऐसा ही कुछ करना होगा हमें इस प्रॉब्लम में, बट द पॉइंट इज वी आर नॉट एबल टू सबमिट, राइट, let's try to submit b1 and if we are able to submit b1 then हम b2 में दिमाग लगाएंगे, otherwise there is no point because we are not able to submit, right, and we are just wasting our time, so let's go to problem b। now हमने डिस्कस क्या किया था कि for b1 the solution is to find the prime factorization, right, of the number। तो उसके लिए बेसिकली एक मेथड होता है quickly find prime factorization of the number, ठीक है, तो क्विकली फाइंड यूजिंग sieve, है ना, sieve से तुम निकाल सकते हो, तो उसके लिए तुम करते क्या हो बेसिकली, तुम ये करते हो कि तुम लाइक फर्स्ट प्राइम ऑफ एवरी नंबर निकाल के रखते हो, राइट, दैट्स व्हाट यू डू, एसपीएफ, है ना, तुम एसपीएफ सबका निकाल लेते हो, ठीक है ना, या और तुम यहाँ पे मैक्सन तक जा रहे हो,
तो बेसिकली 10 टू द पावर 9 तक का मुझे वो चाहिए होगा, राइट? 10 टू द पावर 9 तक का हम निकाल सकते हैं क्या? SPF 'prime factorization of numbers up to 1e9 fast'. How to get prime numbers in many questions. NOC up to, you can use bit set to find the next prime. Um, um, okay. Are people able to submit the solutions? Working fine with VPN. I tried with Proton VPN. I thought Metaverse is already the worst thing that Meta had ever made until I participated in this round. Worked, I tried it, got WA, tried again and does not work again. Clearly frozen, standings aren't progressing. My timer started, but when I get an error message, submit a clarification with output and source code. It is not letting us to submit. Yeah, what is this? So basically, you don't really want like prime factorization of a number which is 10 to the power 9, ठीक है? Why? Because जैसे कि हमने डिस्कस किया था ना कि मिनिमम सम के लिए तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होगे एंड मिनिमम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या ही होगा, लाइक 2 होंगे, राइट? 20 टाइम्स. तो 2 टू द पावर 20 कितना होता है ये बताओ? 2 टू द पावर 20 होता है 10 टू द पावर 6 एंड यू जस्ट नीड दिस मच. अगर इससे बड़ा नंबर होता है ना कोई सा, मतलब इस नंबर से बड़ा, तो उसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो, मतलब उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है, क्योंकि जब तुम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लोगे तो उसका सम डेफिनेटली 41 से ज्यादा ही आएगा, है ना? That's why this problem will give -1 result, like should have -1 for all numbers greater than this guy. ठीक है ना? तो basically that's what our maxn will become. So let's say our m is like, our m is 2 to the power 20 plus 1 maybe, है ना? और let's take 2 to the power 22 maybe. 2 to the power 22 कितना होता है? ठीक है, 4 into 10 to the power 6 is also fine, right? Or maybe let's take 1 just, है ना? That's what our m is. So let's try to find out the prime factorization, right? So we will be taking p, ठीक है?
Now yeah, we will be taking P. We need to find we need to find the prime factorization of P. Okay. To find prime factorization, we will create this, SPF sort of this. So let's create this SPF of size M. Okay. And we will be having a sieve function. So sieve run sieve sort of. ठीक है. तो अब इसमें हम बोलेंगे क्या कि SPF of 1 is 1. Now for each number which is like from 2 till M, right? For each number we will try to fill the SPF sort of. No, like we will assume कि if this number is prime then we need to do something. Okay, so marking smallest prime number of for every number to itself. Okay, understood. So basically, first of all, like we should say कि SPF of I is I, है ना? That's what the initialization is. ही basically हम 4 से start कर सकते हैं. Separately marking SPF for every even number. This is like this does not make sense to me. We can we can start with 2 also, right? Like what's wrong with this? I think we should follow code CP algorithms from CP algorithms, right? We should not follow the code from GFG. SPF, can we calculate SPF CP algorithms? Looks like I need to write it from scratch maybe, or it's fine यार, मतलब we can take help from here. ठीक है. तो अब हम क्या बोलेंगे बेसिकली कि फॉर ईच नंबर फ्रॉम 2 till m, ठीक है, if that number is prime, so if SPF of I is comparable with I, it means I is prime. ठीक है, it means I is prime, है ना? अगर I prime है तो then तुम क्या बोलोगे कि इस प्राइम है ना, तो इसके कौन कौन प्राइम, मतलब इसके कौन, ये किस किस का SPF हो सकता है, तुम उन पे जाओगे, राइट? सो बेसिकली यू विल स्टार्ट फ्रॉम J which is like I times I, and J should be less than M, J plus equal to I, है ना? तुम बेसिकली सारे मल्टीपल्स पे जाओगे I के और तुम चेक करोगे कि अगर SPF of J is still J, it means J is J is thinking itself as prime, which is wrong. Like which is J is thinking itself as its SPF, and which is wrong. ठीक है, तुम क्या बोलोगे कि SPF of J will become I, right? Yeah. Okay. Correct. Now, once we have SPF,
then what we can do is, अब अगर SPF हमें मिल गया ना, तो before even taking like the before taking this, we can like initialize our SPF. ठीक है, initializing SPF array. ठीक है, now we need to find the prime factorization of P. So let's call it temp as P. Now while temp is greater than 1, ठीक है, तो what we will say कि let's call it vector int prime factorization pf. While temp is greater than 1, we will say कि temp will be divided by SPF of temp, है ना, and pf dot pushback SPF of temp. ठीक है, तो अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया. And let's also take sum of pf, or you can say sum of pf. So sum of pf should be incremented by SPF of temp. तो basically हम sum of prime factorization भी लेते जा रहे हैं. Now if sum of pf, ठीक है, तो first of all you need to check if p is greater than or equal to m, then answer is not possible, just print -1. ठीक है, otherwise if sum is greater than 41, then again the answer is not possible, I'm sorry, return. Else add the extra ones. So what you can do is ki extra is basically 41 minus sum. So while extra minus minus, or maybe what you can say is ki for int I less than extra I plus plus pf dot pushback 1. You can sort this pf. ऐसे वैसे क्वेश्चन में लिखा तो नहीं है, बट ठीक है, इट्स फाइन. यू कैन सॉर्ट दिस pf and then you can print this, right? That's what we have to do in this problem. So sum of pf, right? It's actually sum of pf. Yeah, it's sum of pf actually. Yeah. So okay, in case 1 we got something like this. In case 2, actually we could have combined 2 and 19 so that it becomes 38, but ठीक है, that's fine. Then हमें 41 मिल गया. Oh my god, why you are doing this 1 and 41? Isn't it bad? What? How is this possible? Like 1 और 41 अगर तुम दे रहे हो, product is ठीक है, but sum is greater than 41, right? 42 हो रहा है उस केस में. I think the output is also wrong. I don't understand, yeah. I mean, 1 and 41 is wrong, right? I mean, yeah, according to me it is wrong. 175 is 557. 175. 25 into 7. What? Case 4. So 1, 2, 3, 4. What is 15 into 35? Whoa.
How is their product is coming out to be 175? Please explain to me. What is this here? I mean, looks like the sample output is also wrong. Uh, 1, 2, 3, 4, 175. You are giving me this, which has sum greater than 41. Oh, okay. I think the output format followed by an integer and the size of your array. Acha, okay. I misunderstood it actually. Okay, this is the size. Okay, you need to also print the size, yeah. So, okay, so here, like while temp is, है ना, if देखो अब अगर temp जो है वो 1 नहीं है, right? So if ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कभी होगा क्या कि temp 1 ना निकले? नहीं हो सकता, राइट? ओके, सबसे पहले तो एक केस ये हैंडल कर लो तुम कि अगर P1 है ना, तो यू विल बी प्रिंटिंग 1 and 1, ठीक है, रिटर्न, है ना। अब उसके बाद अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन तो मिलना ही चाहिए मेरे ख्याल से। सो लेट्स कॉल assert tem is 1 मे बी, ठीक है, एंड देन यू शुड गेट द रिजल्ट ऑल्सो, राइट? सो cout pf int pf dot size, है ना, and then print this. So yeah, shit. Yeah, right. So assertion we can remove actually, क्योंकि हाँ ठीक है, तो this looks good to me, है ना। तो validate solution and submit, download the validation input. We downloaded the validation input, which is looks like this. Okay, now we should run this test on sum underscore 41 validation input to output db.txt. Let's check the output b also. Okay, so now output b, validate. Okay, looks like validation is successful. Now we need to download the password predicted full input, which we have downloaded. So newbies ag, paste it, hit password and start timer, right? So extract here, use files maybe. No, does not extract the things, right? No, open, extract here, use archive manager, ठीक है, then extract, है ना, and extract here. Now you need the password, right? So get password in the timer. That's the password. Okay, replace file. What? No, I don't want to extract this, man. What are you doing? I want to extract this file. Extract here, archive manager, extract this file, extract it, and okay, close it. Looks like I'm able to extract the file. Now dot slash, now सबसे पहले remove output b, now dot slash test,
sum 41 input.txt and then output underscore b.txt. Let's see if our output looks good enough. Okay, it looks like it is good enough. Yeah. So let's try to submit this maybe. So output b and b.cpp. Right, let's try to submit this. Okay, looks like my submission is now done. Okay, finally I'm able to submit my problem B1 solution. Right, now let's move to B2 and okay. So yeah, so let me take a quick break and I'll get back. Right, so b.cpp and क्या हमने सारी चीज़ें सही की हैं? I think yeah, for B1 we have done like the correct code. Now let's see B2. Okay. Let's see quickly. Like, do we have any like announcement regarding like aborting the round? So if you get any error, the submission system should be gradually. Please submit normally. Okay, let's see if what is code forces say. Yes, and to balance out, please provide t-shirts to all. I downloaded the C1 validation input 2 times and got the same happened for me. One line is always missing. I'm getting the presentation error. Again, a devastating experience. What? What is this? You have already. I'm just retarded. The first number is the array size. First number of each is the array size. This is what also I thought, right? Okay, cool. So now we'll move to B2 maybe. And we were not able to submit A. I hope they take my submission. I hope they take my submission. Okay. We will focus on B2 after I take a break. Okay, I'll be back.
Okay, so we are back. Let's see the scoreboard, like what is going on. Wow, BenQ solved everything. That's nice. Okay. People solved everything, it looks like. Okay. Let's go to B2. अब इसमें प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है? What about me? Like, is this scoring my submissions? How can I check? Yeah, my score is coming right. 11. Yep. Okay. ठीक है. Good. Um, okay. To get an error when trying to upload, please make clarification request instead that includes both your source code and output. The submission system should be gradually recovering. Please submit normally if you are able to. Okay, ठीक है. Now we are moving to B2 problem. तो B2 में basically हमें करना क्या है कि we need to print one with the fewest number of elements. ठीक है. तो अब array का size हमें कम से कम रखना है. ठीक है ना. array का size हमें कम से कम रखना है. तो ठीक है ना. तो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम B2. B1 में हमने ये डिस्कस किया था कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर ले लेंगे तो बेसिकली मिनिमम सम पॉसिबल होगा. बट अब हमें एक्चुअली में ऐसा एरे चाहिए जो कि मैक्सिमम सम हो विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 41. इस टाइप का एरे चाहिए जो कि का मैक्सिमम सम हो बट वो 41 से छोटा हो, ताकि हमें कम वन को ऐड करना पड़े. राइट. तो फ्यूअर एलिमेंट्स होंगे उसमें, है ना. नहीं नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं बोल सकते तुम. एक्चुअली में यहाँ पे दो चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 39 सम बना लेते हो बट यू आर यूजिंग लेट्स से 5 एलिमेंट्स, है ना, एंड समवन इज मेकिंग 38 इन 2 एलिमेंट्स. ठीक है. तो आई विल प्रेफर दिस गाय राइट ओवर दिस. क्योंकि इसको 41 में बनाने के लिए तुम 3 1 ऐड करोगे एंड दैट विल मेक अप द स्कोर 5 एलिमेंट्स. बट इसको बनाने के लिए तुम 2 और ऐड करोगे एंड दैट विल मेक अप द स्कोर एज 7. तो हमें मैक्सिमम सम नहीं चाहिए यार, हमें एक्चुअली में लाइक द कॉम्बिनेशन शुड बी लोअर. ओके. तो अब इसमें अपन थोड़ा सा सैम्पल्स को देखते हैं एक बार. राइट. कि अपन फ्यूअर एलिमेंट्स पे कैसे पहुंचेंगे. फॉर एग्जांपल 2023 था, है ना. उसके अपन ने देखे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था उसका. 7 इंटू 17 इंटू 17. ठीक है. एंड द पॉइंट इसके यहाँ पे 41 ही सम आ गया. दिस इज द बेस्ट पॉसिबल. ठीक है. फिर 114 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ यार एक बार. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 114 actually. Prime factorization of 114 is 2 into 3 into 19, right? Is this 2 into 3 into 19? Yes. ओके. तो अब अपन को मिनिमम वो चाहिए. तो अभी इनका सम क्या आ रहा है बेसिकली. अभी अगर तुम ये तीनों लेते हो ऐसे करके तो इनका जो सम आएगा वो आएगा 24 और तुम्हें बहुत सारे वंस ऐड करने पड़ेंगे. राइट. बट अगर तुम 2 और 19 को ले लेते हो सो इट विल बिकम 3 इंटू 38 एंड दिस इज गुड बिकॉज तो यहाँ पे जो मेरी थ्योरी थी कि हम लाइक
स्मॉलेस्ट दो को हमेशा लेंगे, दैट इज रॉन्ग राइट, क्योंकि अगर तुम इन दोनों को क्लब करते तो क्या होता, 6 into 19 बनता, ठीक है, विच इज 25 सम ओनली, राइट। वाओ, तो यहाँ पे 2 into 19 विच इज 38, 3 into 38 करते हैं अपन तो सही आता, राइट। तो आंसर वुड बी 338। 41 is 41 only. Okay. Then 175. So 175 is like 1 into, wait, 1 into 5 into 5 into 7, 175 is this, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो इसमें, तुम देखो 5 और 5 को भी क्लब कर सकते हो, विच विल बिकम 25 into 7, है ना, और तुम 5 और 7 को भी क्लब कर सकते हो, राइट, विच विल बिकम 35। तो बेसिकली 35 और 5 लेंगे अपन, बट ये डिसाइड कैसे करेंगे कि किसको क्लब करना है किसको क्लब नहीं करना है। या दैट्स ट्रू यार, हाउ विल वी डिसाइड। um um I don't really know. 1535 2731, then prime factorization of 666 क्या होता है। Prime factorization of 666 is 2 into 3 into 3 into 37, which is already greater than 41 in terms of sum, तो इसका possible ही नहीं होगा, that we already discussed, right? Yeah, okay. अब ये फ्यूअर एलिमेंट्स डिसाइड कैसे करेंगे, लाइक 1872 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 26, सो 26 इज 2 इंटू 13। अब बेसिकली तुम ऐसे सोचो कि फ्यूअर एलिमेंट्स चाहिए, राइट, हमें इन टोटल। अभी इसका सम क्या है, 2 और 2 इज 2 2 2 2 इज 8, 6 14 27 इज सम, ठीक है। अब बेसिकली मुझे इस सम को धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे धीरे, या फिर लाइक तो मैं धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहूँगा, राइट, मतलब एकदम से ज़्यादा बड़ा क्यों लूँगा मैं। तो लेट्स से मैंने बोला कि इस 2 और 2 को क्लब करो, इस 2 और 2 को क्लब कर दो, तो फिर वो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 13। नाउ द सम इज अगेन द सेम, राइट, हमने इससे कुछ किया नहीं। 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4। अब क्या मैं 3 और 3 को क्लब कर सकता हूँ, क्या मैं इनको 9 बना सकता हूँ? द आंसर इज येस, यू कैन मेक इट 9। It will become 9 into 4 into 4 into 13, and the sum right now is 30, ठीक है। तो 4 into 4
into 9 into 13. Now, can I make this 4 and 4 as 16? The answer is yes, you can do that. So 9 into 13 into 16, and now it is 38. And then you need to add 3 ones. Okay, that's what my greedy solution tells, but the answer is actually very good. Right, so they are able to do 3 and 3 and 2 and 13 mixed up. तो इन्होंने आंसर ही ऐसा बना दिया which will become 41. Okay, that's strange. Can we try out all the possibilities? Can we try out all the possibilities? I think we have to try out all the possibilities and like, right? क्योंकि कोई smart way लग नहीं रहा है मुझे जो इस problem को solve कर पाएगा. Like if we have 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 13 into 2, right? तो अभी तुम ऐसे सोचो, अगर तुम इनको क्लब करते हो बेसिकली, ठीक है, ये एडिशनल वंस है ना. जब तुम इनको क्लब करते हो तो तुम इसका सम बढ़ाते हो तो एडिशनल वंस अपने आप कम होंगे. बट द पॉइंट इज कि क्लबिंग कैसे की जाए, है ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं क्लबिंग पे. राइट. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है बेसिकली, कि तुम 5 लोगों से ज़्यादा को क्लब कर नहीं सकते, राइट. एक्चुअल में जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन का साइज देखोगे तो वो कितना ही हो सकता है, वो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, लाइक मैक्सिमम. तो 2 है ना, 32 एंड देन 64, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है. मैक्सिमम जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ना उसका साइज 5 हो सकता है. नो, व्हाट आई एम सेइंग दिस, नो 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 नो. एक्चुअली मैक्सिमम जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसका साइज तो 20 तक हो सकता है, राइट. मतलब 2 इंटू टू इंटू टू ऐसे 10 टाइम्स कर लोगे तुम.
ओ मैंने कुछ गलत कर दिया राइट। 10 टाइम्स क्यों करोगे, 20 टाइम्स करोगे ना। मैक्सिमम प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसका साइज 20 हो सकता है। अम्म, और तुम क्लब जब कर रहे होगे, तुम कितना ही क्लब कर पाओगे एक बात बताओ। हम्म क्या तुम 5 क्लब से ज़्यादा कर पाओगे? द आंसर इज़ नो। क्योंकि अगर तुमने ऐसे भी है तुम्हारे पास, ठीक है, और लाइक जो भी है तुम्हारे पास 10 ही लोग हैं मान लो, या ठीक है 4-5 ही लोग हैं, और 6 लोग ही हैं तुम्हारे पास, ठीक है मान लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अगर तुमने इनका सम लिया, दैट इज कमिंग आउट टू बी 12, बट तुम इनको क्लब नहीं कर सकते सबको, बिकॉज दैट विल बिकम 64। तो द बेस्ट यू कैन डू इज 2 इंटू 32, है ना, दिस इज द बेस्ट यू कैन डू। कहने का ये मतलब है कि कितना भी बड़ा तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो, ठीक है, तुम नहीं यार, आई गेस हम कर तो सकते ही है ना क्लबिंग। क्लबिंग का मतलब ये थोड़ी है कि तुम हटा रहे हो, बट ओके, अगर तुम इनको क्लबिंग मानोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 भी तो है। आई एम नॉट एबल टू थिंक राइट नाउ कि कैसे हम उसको मिनिमम बनाने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए फॉर दैट रीज़न वी कैन मे बी मूव टू C1। लेट्स सी इफ लाइक ओके, looks like we should give a break on B2. We should instead read C1. Right, so problem shares some similarities with C2, with key differences in bold. A friend who works at metal platforms INC just lent you a curious puzzle. Puzzle consists of n buttons in a row numbered from 1 to n. Okay, the initial state of button I is white. Initial state of button I is white if Si is 1, or black if Si is 0. Pressing a button K toggles the state of itself as well as every kth button. Your friend challenges you to return the puzzle to him with all buttons back in black. Life is hard enough without siblings pushing your buttons. Unfortunately, your brother has taken the puzzle and will push Q buttons sequentially, the 8th button being PI. After your brother has pushed all Q buttons, you'd like to know the minimum number of button presses required to turn all the buttons black. Okay, so ठीक है। Hmm, so
looks like we have a binary string. So we are discussing now problem C. ठीक है. So the puzzle consists of n buttons in a row, numbered from 1 to n. The initial state of button I is white if Si is 1 और black if Si is 0. तो basically तुम्हें एक binary string दिया हुआ है, right? है ना, of 1 0 something like 1 1 फिर 0 0 0 फिर 1 1 फिर 0 1 0 1 1 0 ऐसे करके कुछ तुम्हें एक बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है. अब बटन इज वाइट इफ Si is 1 और ब्लैक इफ Si is 0. ठीक है. Pressing a button K toggles the state of itself as well as every kth button. So every kth button, what does it mean? Every kth button क्या होगा? Let's see. तो बेसिकली तुम्हारे भाई ने कुछ कुछ कर दिया है, बटन्स दबा दिए हैं और फिर यू आर डूइंग समथिंग समथिंग. ठीक है. तुम्हें बेसिकली n दिया हुआ है विच इज़ द स्ट्रिंग साइज, देन q दिया हुआ है. q इज कि उसने कितने बटन्स दबा दिए हैं. ओके. After your brother has pushed all q buttons, you would like to know the minimum number of button presses required to turn all the buttons black. और C2 में क्या है? अच्छा, followed by as the single integer after each of the q presses you need to tell me. Okay, इसमें after all. अच्छा, सैम्पल एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सबसे पहले इनिशियल स्टेज जो था वो 1 0 1 0 था, तो ये ब्लैक है और ये वाइट है. और तुम्हें बेसिकली n स्ट्रिंग दिया हुआ है, then there is a line containing q. तो बेसिकली अच्छा b1, तो उसने 1 को उड़ा दिया, 1 को बेसिकली प्रेस किया. तो प्रेस करने का मतलब क्या होता है? Pressing a button K toggles the state of itself as well as every kth button. Okay. So after pressing button 1, every kth button, pressing a button K toggles the state of itself as well as every kth button. अच्छा, ओके. तो बेसिकली ये तुम्हें करना कुछ नहीं, तुम्हें सबको ज़ीरो बनाना है. ठीक है, इस प्रॉब्लम में, है ना. और अगर तुम लेट्स से किसी भी बटन को दबाते हो, फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बटन, इसको अगर तुमने टॉगल कर दिया तो ये इसको तो टॉगल करेगा ही और एवरी फिफ्थ बटन को टॉगल कर देगा, मतलब आई थिंक मल्टीपल्स को. तो 10th वाला बटन भी टॉगल हो जाएगा, फिर है ना, फिर 15 वाला बटन भी टॉगल हो जाएगा. समझ आ रही बात? ओके. अंडरस्टूड. और एक बार लाइक लेट्स से तुम्हें ये बताना है कि मिनिमम कितने बटन हमें दबाने पड़ेंगे, राइट? इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एक्चुअली. ओके, तो अभी तो तुम ये बटन बटन जो उसके भाई ने दबाए हैं उसको भूल जाओ. तुम इनिशियल स्ट्रिंग पे फोकस करो. ठीक है. लेट मी चार्ज माय लैपटॉप. तो इनिशियल स्ट्रिंग पे फोकस करो. अगर मैं तुम्हें ये स्ट्रिंग देके पूछता कि सबको अगर 1 बनाना है तो कितना कॉस्ट लगेगा, तो कैसे आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को हम?
क्या हम देखो इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम इस बटन पे खड़े हैं ना तो हम इसके राइट मोस्ट पार्ट को चेंज कर रहे होंगे, लेफ्ट मोस्ट पार्ट को चेंज नहीं करेंगे, राइट। तो बेसिकली अगर हमें इस वन को 0 बनाना है तो हमें इसको टॉगल करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। इसको बाद में टॉगल क्यों करोगे तुम, इसको पहले ही टॉगल करोगे ना। तो तुम सबसे पहले इसको टॉगल करोगे, राइट। इसको टॉगल करने से क्या होगा, हर सेकंड बंदा है ना, हर सेकंड बंदा टॉगल हो जाएगा, विच मीन्स कि ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये सेकंड है तो फोर्थ, सिक्स्थ, फिर एट्थ, है ना। इतना बड़ा स्ट्रिंग मत बनाओ, छोटा सा बनाते हैं। तो इसको टॉगल करने के चक्कर में ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, राइट। ये 0 हो गया, अब इसको टॉगल करना पड़ेगा, राइट। इसको टॉगल करने के चक्कर में दिस थर्ड, इसको टॉगल करेंगे तो ये भी टॉगल हो जाएगा एंड दैट्स इट, है ना। तो उसमें पूरा हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो बेसिकली अगर हमारे पास अगर स्ट्रिंग है तो आई गेस जो मैंने सोचा है कि हम लेफ्ट से राइट चलेंगे, उससे हम नंबर ऑफ मूव्स तो पता लगा लेंगे, दैट्स व्हाट आई फील, है ना। नंबर ऑफ मूव्स तो हम पता लगा लेंगे। अब प्रॉब्लम आती है कि जो उसका भाई है उसने ये सारे बटन्स दबाए हैं सीक्वेंशियली, है ना। तो उसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा एक्चुअली में। Right. After your brother has pushed all Q buttons, you'd like to know the minimum number of button presses required to turn all the buttons black. तो okay. ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम सी को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। हम तो अभी मेन इशू क्या है कि हम जब उसके भाई ने सारे बटन्स दबा दिए तो क्या हम वो सारे बटन्स दबाने के बाद स्ट्रिंग क्या दिख रही होगी उसके भाई के बटन दबाने के बाद, क्या हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द मेन इशू, राइट। तो अब तुम इसको ऐसे सोचो कि लेट्स से वी हैव दिस स्ट्रिंग, ठीक है, which is like 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। और अब उसका भाई जो है वो बेसिकली ये बटन्स को दबा रहा है, राइट, विच इज 1 3 2 6 7 4 2 5, है ना। ऐसे वो बटन्स को दबा रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, इसको पहले एक बार क्या इसका ऑर्डर मैटर करता है, आई गेस नो, क्योंकि जब तुम एट लास्ट देखोगे तुम यही पूछ रहे हो ना, यार मुझे ये बता इस बटन को टोटल कितनी बार टॉगल किया गया, है ना, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे टोटल कितनी बार टॉगल किया गया। तो इसलिए हम इसको एक बार सॉर्ट कर लेते हैं। तो 1 2 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब सिंस जो सेकेंड बटन है ना, वो 2 बार दब रहा है, मतलब है ना इवन नंबर ऑफ टाइम्स दब रहा है, तो क्या एक्चुअल में हमने सेकेंड बटन को दबाने से कुछ भी चेंज लाए होंगे क्या? द आंसर इज नो, राइट। क्योंकि लेट्स से सेकेंड बटन को दबाने पे इस पे जो जो इसके मल्टीपल्स हैं उन पे एक एक बार चेंज आया, एक एक बार टॉगल हुआ, फिर से तुमने दबाया तो ये 2 बार चेंज आया। 2 बार टॉगल करने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 1 है तुमने उसको 0 बनाया फिर से 1 बना दिया, इट मीन्स देयर इज नो चेंज। तो अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स कोई आ रहा है ना बटन तो उसको तुम उड़ा सकते हो, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा तो तुम उसको बस एक ही बार लोगे। तो कहने का ये मतलब है कि इवेंचुअली ये जो बटन्स जो उसने दबाए हैं ना उसमें सारे यूनिक वैल्यूज होंगे, ठीक है। या मेक सेंस नाउ। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब एक काम करो तुम, ये 1 है ना, तो इसने सबके कॉन्ट्रीब्यूशन में लाइक सबके नंबर ऑफ टॉगल्स में, है ना, इसको ऐड कर दो, तो 1 इसके टॉगल्स में ऐड करेगा, राइट, दिस इज द पोजीशन।
1 2 3 4 5 6 7। 1 का मतलब ये है कि यार 1 जब बटन दबाया होगा तो ये एक बार टॉगल हुआ होगा, ये भी एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार, राइट। तो जब सेकेंड बटन सब थर्ड बटन दबाया होगा तो ये बंदा एक और बार टॉगल हुआ होगा और ये बंदा भी एक और बार टॉगल हुआ होगा। जब फोर्थ बटन दबाया होगा तो ये एक बार टॉगल हुआ होगा, फिफ्थ, फिर ये सिक्स, तो ये सेवन, तो ये। अब तुम्हारे पास इनके टोटल टॉगल्स आ गए हैं, राइट। इनका टोटल लगा लो तुम, है ना। तो बेसिकली इनके टोटल टॉगल्स हमारे पास आ चुके हैं, राइट, विच इज, इसको थोड़ा सा हम नीचे भेजें क्या। हाँ, इनके टोटल टॉगल्स हमारे पास आ चुके हैं, राइट। ये एक बार टॉगल हुआ होगा, ये एक बार, ये दो बार, ये दो बार, ये दो बार, ये तीन बार, ये दो बार। अब जो लोग दो बार हुए हैं उसका यही मतलब है कि इन पे कोई चेंज ही नहीं आया, तो इसको तुम, है ना, तो ये इन पे तो कोई टॉगल हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, और इस पे टॉगल हुआ है बिकॉज दिस इज ऑड। तो कहने का ये मतलब है कि ये पोजीशन पे टॉगल हुआ है तो इट विल बिकम 1, इस पे टॉगल हुआ है तो इट विल बिकम 0, इस पे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इट विल बिकम 1। दिस इज योर स्ट्रिंग आफ्टर योर ब्रदर हैज प्रेस द बटन्स। अब तुम नॉर्मल यही करोगे। अब इसको सारे 0 बनाना है तो सबसे पहले इसको टॉगल करना पड़ेगा, राइट। इसको टॉगल करना पड़ेगा, राइट। तो तुमने इसको टॉगल कर दिया, है ना। तो ये इसको जब टॉगल करोगे तो ये 0 हो गया, ये 1 1 और बाकी सब लोग 0। फिर तुम इसको टॉगल करोगे, जब इसको टॉगल करोगे तो ये एक मिनट, जब तुम इसको टॉगल करोगे 2 4 6, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा। अभी दो टॉगल हो चुके हैं, ठीक है। अब तुम इसको टॉगल करोगे, राइट, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एक और टॉगल हो गया। तुम इसको टॉगल करोगे एंड दैट्स इट, राइट। सो आई थिंक आंसर 4 होगा इस केस में। हाँ, दैट्स 4, राइट। तो दिस प्रॉब्लम लुक्स फेयरली सिंपल इनफ, है ना, इसमें कुछ नहीं है, पैरिटी का खेल है। तो C1 तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, राइट। C2 में मे भी थोड़ा सा दिमाग लगे, बट C1 तो हम सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक वी शुड क्विकली सॉल्व C1 फर्स्ट सो दैट हम अंडर 5000 रैंक में आ जाएं। दैट्स व्हाट द एम ऑफ दिस कॉन्टेस्ट फॉर मी, क्योंकि ऑलरेडी लाइक इट्स माई स्लीपिंग टाइम, ठीक है, एंड आई एम लाइक participating in this contest, right? So it's fine. What we can do is we can quickly like solve C1, right, at least. So what we can do here is input format, right? So we have n, okay. So then we have a string s, okay. Then we have q, and then we have the buttons. So vector int, you can say brother of size q, and then you need to take the brothers array c in br of I, ठीक है। अभी बेसिकली लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द फाइनल स्ट्रिंग, जो कि है ना। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द स्ट्रिंग आफ्टर brother has pushed all the buttons। तो उस केस के लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी एरे सबसे पहले बनानी होगी, दैट्स व्हाट आई फील, है ना। तो वेक्टर इंट फ्रीक्वेंसी, सो वेक्टर इंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साइज n, ठीक है। और br का मतलब क्या हुआ बेसिकली यहाँ पे कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बटन -1 है उसमें तुम्हें 1 ऐड करना है, राइट। तो बेसिकली ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी br -1 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम 0 बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, राइट। एंड यू नीड टू टेक द मॉड, बिकॉज हम पैरिटी की बात करेंगे तो मॉड से काम होगा, ठीक है। मॉड, है ना, पैरिटी चेक कर रहे हैं हम बेसिकली, कोई कितनी बार हो रहा है कितनी बार नहीं हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है। अब जो जो लोग हो रहे हैं हम क्या करेंगे, उनके सारे मल्टीपल्स पे आइट्रेट करेंगे, है ना। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि अदरवाइज हाउ विल यू चेक, है ना। तो बेसिकली
अब तुम क्या करोगे, टॉगल वेक्टर इंट टॉगल ऑफ साइज n, ठीक है। अब तुम ये बोलोगे कि फॉर ईच गाय फ्रॉम i to n इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ i इज समथिंग, तो अगर ये 0 है तो यू विल से कंटिन्यू, otherwise if it is something so it will toggle, so basically it will toggle all its multiples, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम i के मल्टीपल्स नहीं लेंगे, we will take multiples of i plus 1, राइट, है ना, वो होंगे हमारे पोजीशंस 1 बेस्ड में। तो j को हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली i plus 1 से, j should be less than or equal to n, j plus equal to i, है ना। तो बेसिकली iterating over all multiples of i plus 1, ठीक है। Now we will say कि toggle of j minus 1 में toggle of j minus 1 plus 1 कर देंगे, राइट, mod 2। j माइनस 1 क्यों लिया है यहाँ पे हमने, क्योंकि हम 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में का बात कर रहे हैं। जब भी तुम्हें एरे में इंडेक्सेस मार्क करने होंगे तो तुम्हें -1 करना होगा, ठीक है। तो अब तुम्हारा टॉगल हो गया, राइट, गुड। नाउ तुम्हारा टॉगल अगर तुम्हें पता चल गया तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रिजल्टिंग एरे, और यू कैन से स्ट्रिंग। राइट, so let's try to find out the resulting string. So resulting string क्या होगा basically, for int I is equal to 0, I less than n, I plus plus, अगर, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि अगर ये टॉगल हुआ है, तो अगर टॉगल ऑफ I is 1 देन हम बोलेंगे कि हाँ टॉगल तो हुआ है s, है ना। तो अब हम यहाँ पे वही बोलेंगे कि टॉगल बेसिकली टॉगल दिस बटन, है ना। तो if s of I is 0 then make this 1, else make this 0, ठीक है। toggle this button, राइट। तो मेरे ख्याल से हाँ हम सही कर रहे हैं। तो अब हमारे पास रिजल्टिंग स्ट्रिंग आ चुका है, which is this, ठीक है। अब हमें निकालना है कि हम कितने ऑपरेशंस कर रहे होंगे। तो वो ऑपरेशंस करने के लिए हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा, लाइक लेफ्ट से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसे चलेंगे, अगर ये 1 है अभी तो हम बोलेंगे हाँ इसको 0 बनाना पड़ेगा, ये टॉगल होगा अगर, तो ये अपने मल्टीपल्स पे फिर से टॉगल 1 करेगा, राइट। और अब बेसिकली देखो हम कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ इसको स्मार्टली कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 1 0 0 1 1 1 1 है और निकालना है अगर, तो हम एक, ये तो पोजीशंस हैं, ठीक है, इसके तो पोजीशन लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे हम टॉगल लिख देते हैं। तो अभी कोई भी टॉगल नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आए, सिंस ये 1 है बेसिकली, है ना, सिंस ये 1 है तो हमने बोला यार कि हमको तो 0 चाहिए है। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब तो मैं बोलूँगा यार इसको टॉगल तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ यार ये टॉगल हो गया, तो इसने एवरी फर्स्ट बंदे को, मतलब अपने सारे मल्टीपल्स पे टॉगल 1 करेगा ये। अब तुम यहाँ पे आए 2 पे, तुमने देखा कि अरे इसका ऑलरेडी ये टॉगल्ड हो चुका है, तो तुमने बोला हाँ ये 1 है एक्चुअली, 0 नहीं है, क्योंकि ये टॉगल्ड हो गया ना। अब तुम चेक करोगे, तुमने बोला यार 1 तो नहीं चाहिए मुझे, तो इसको टॉगल करना पड़ेगा। सिंस ये टॉगल होगा, राइट, सिंस ये टॉगल हुआ तो ये अपने साथ हर अपने मल्टीपल पे टॉगल छोड़ेगा, ठीक है ना। फिर तुम 3 पे आओगे, तो ऐसे करके तुमको टॉगल एरे भी मेंटेन करना है, और तुम उस टॉगल से इसका फाइनल वैल्यू निकालोगे, एंड देन यू विल टेक डिसीजन वेदर टू टॉगल दिस बटन और नॉट।
ठीक है, I hope कि I make some sense. Let's try to find out the resulting array. तो now we got the resulting string. तो एक काम करो, रिजल्टिंग स्ट्रिंग नहीं बनाते हैं, राइट? तो स्ट्रिंग t of size, or maybe you can say resulting string, right, of size n, or maybe you can assign it to s, and if you have to toggle, then you will say resulting string is 1, else you can also check here also na, resulting string है ना, and you can also call resulting string here. ठीक है, now you need to create another toggle which is toggle 1 of size n. ठीक है, now try to find out the count of buttons that needs to be toggled. So for int I less than n, I plus plus, let's first try to find out its actual so let's try to find out its actual value, right? तो उसके लिए अब है ना, तो और काउंट के लिए हम अपना एक आंसर वेरिएबल रखेंगे, ठीक है? तो उसके लिए हम टॉगल 1 को चेक करेंगे. तो इफ टॉगल 1 ऑफ i इज समथिंग, तो वी नीड टू टॉगल दिस, है ना, वी नीड टू टॉगल दिस. तो राइट, तो अगर टॉगल तुम करोगे, टॉगल 1 ऑफ i कुछ है, तो आई थिंक इतना इफ एल्स लिखने से अच्छा यू कैन ऑल्सो डू सम स्मार्ट वे. देखो मैं बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लेट्स से वी हैव a string s as 111, ठीक है, and let's say if we want to toggle the first element, what we can do is we can do s of 0 to be XOR with 1 XOR 0. इससे होगा क्या कि तुम बोल रहे हो s of 0 में इसका XOR कर दो और जो भी s of 0 की वैल्यू होगी ना वो टॉगल हो जाएगी, राइट? दैट्स व्हाट यू कैन डू, है ना, बेसिकली. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इफ एल्स, ठीक है, इफ वी हैव टू टॉगल इट, तो हम बोलेंगे रिजल्टिंग स्ट्रिंग ऑफ आई, we have to XOR it with 1 XOR 0. That's it, है ना. तो we can write here toggle this button. That's it, है ना. We need to toggle this. Similarly, if अगर toggle 1 is like true here, we will say resulting string of I, ठीक है, should be toggled, right? So 1 XOR 0. ठीक है. Now we will check. Now check if this value is 1, then we have to toggle this button. So if resulting string of I is comparable with 1, so we have to toggle this button. ठीक है, तो हम बोलेंगे आंसर प्लस प्लस. एंड नाउ सिंस वी आर टॉगलिंग, सो हमें इसके सारे मल्टीपल्स का काउंट चेंज करना होगा, राइट? सो update the toggle 1 of its multiples, ठीक है ना, of multiples of I plus 1, actually multiples of I plus 1. So we will again start from j. For in j I plus 1, j should be less than equal to n, j plus equal to I, ठीक है. And then we will say कि toggle 1 of j minus 1 is toggle 1 of j minus 1 plus 1 mod with 2. That's what we did, right? Previously also. Yeah, that's what we did previously also. ठीक है. And I think that is it, and you need to print the count. Okay.
Let's try to see if this works. Oh my god, it is not working. Looks like we are okay. Looks like we are taking incorrect number of inputs. So let's try to solve it for one. Whoa, why you cannot write? Okay, now it is able to write. Good. So I think it's fine if we do it just for one case, which is 4 and 1 1. Right. So are you able to solve it for one case? Oh my god, what is this? Are we doing something wrong? So we need test case. Then okay, announcement has been posted. We have extended the contest by 30 minutes to account for the system issues. Your existing accepted and time penalty are not. We will not be reviewing previous manual submissions. Resubmit to any problems you have had issues. Wow. Really? Really? How can you do it, yaar? मतलब hmm, hmm, I think it's fine. We can just choose output A here and A dot CPP, right? Yeah, let's try to see if this works. Okay, it is showing something at least. Submitted, submitted. Right, is my output A having some files? Yeah, it is having 20 values, which is good, right? Yup. Okay, it's fine. So, we have extended to account. We have reset timers for everyone on every problem. Your existing accepted solutions and time penalty are not affected. Will not be reviewing previous manual submissions at this point. Please resubmit to any problems you have had issues with the remaining contest time. Wow. Okay. So let's focus on C1, like why we are not able to do it, right? What is going wrong? I mean, we are taking n as input, which is okay. We are taking the test case also, and then we are taking n, and then we are taking s, and then we are taking q, and then we are taking q array. Debug, hello. I reached till here. Okay, looks like we are running an infinite loop. Okay. So are we getting this? Debug resulting string? Nope, we are not getting this. Um, okay. How can you do this j plus equal to I? It should be j plus equal to I plus 1, right? Since we are iterating over multiples of I plus 1, so you should write I plus 1. Wow. Yeah.
Okay, looks like now we are 11440, which is good. So validate the solution, download validation input. Okay, so maybe we can directly move it now instead of, yeah. What is the name of the file? Back in black, right? So move downloads में back in black to here, ठीक है? So now we have back in black, ठीक है? What we need to do is ./test back in black, इसको output underscore c में हम डाल देंगे. So output underscore c में हमारे पास है, right? We have like some inputs. Now हम basically इसको check करेंगे. तो output underscore c को हम validate करेंगे. And it looks like the solution is validated. Now if solution is validated, I'm assuming कि my solution is correct. ठीक है? Because why I'm assuming my solution is correct? Because ये सही होगा, right? Okay, very good reason. Downloading the password predicted input file, which is back in black. Move downloads back in black dot input to here, ठीक है? Now we have this input file, है ना? Now we need to extract this. तो extract करने के लिए maybe हम यहाँ पे आएंगे और back in black को हमें extract करना है using archive manager. We need to extract this file here, right? We need the password. So download password predicted full input, get password and start timer. So password is this. We submitted it, closed it. We have the file now. Now we need to run it, right? So ./test remove output C. Now ./test back in black input.txt and output c.text. Okay, let's see if we are able to do it. Okay, we are able to do it, looks like. Okay, so now we just need to submit these two files, right? So here output c, right? Output c में किया था ना हमने? Yeah, that's what ना, हमने जो वो कमांड रन की थी वो आउटपुट सी के लिए की थी और बैक इन ब्लैक चैप्टर 1 के लिए ही की है, राइट? इनपुट, हाँ. तो हमने c.txt कर दिया और यहाँ पे आई थिंक c.cpp करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे. वो नो यार, डोंट डू दिस. oops, an error occurred. Why this Facebook why their servers or whatever it is, like why it is very bad. This is source code c.cpp. Please submit it, please. Okay, finally it submitted my solution. Now we have only 35 minutes left, है ना? We should think about B1, B2 and C2 in this time, right? Instead of thinking about D and E, because I think D and E must be a difficult problems, है ना? तो अब C2 क्या बोल रहा है ये बताओ. तो I should think about C2 first, because B2 यार मुझे लग रहा है कि कुछ brute force टाइप का है उसमें, बट अभी क्लिक नहीं कर रहा है ना? तो let's quickly take a break. Wow, I'm feeling so tired यार. इतना बुरे टाइम पे लोग कॉन्टेस्ट कराते हैं.
ठीक है, let's quickly take a break and then we will like think about C2 and B2. Okay, so I am back. What is our rank right now? It's 2040 or around like 2100. Okay, so to advance to round 2, you must score at least 10 points in this round. Okay, what? Wait, but something else was written, na? To advance to round 2, you must score at least 10 points in this round. Whoa, what is this? अगर हमने 10 पॉइंट्स किए हैं तो like we are advancing to round 2. Okay, this does mean कि we are advancing to round 2 right now, right? Because I was thinking कि I need to get into top 5000, but it looks like they have changed the criteria. And also we have like 1 hour remaining right now. Okay, so looks like we have like enough time to try B2 and C2. Okay, let's go to C2 I know, because I think we can crack it. So अब इसमें करना ही कुछ नहीं है. After your brother pushes each button you would like to add to your answers, the minimum number of button presses required to turn all the buttons back. Basically हर button push के बाद आपको you would like to add to your answer. अच्छा,
तुम्हें बेसिकली समेशन बताना है। कहने का मतलब है कि पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कैसे किया था। पहले वाला क्वेश्चन जो C1 था वो हमने सॉल्व ऐसे किया था ना कि हमने एक बार लाइक रिजल्टिंग स्ट्रिंग बना ली ये वाली, उसके बाद फिर काम करना आसान है, राइट, सारे बटन पुश करके, है ना। तो बेसिकली रिजल्टिंग स्ट्रिंग बनाने में हमको n log n टाइम लगा, क्योंकि फॉर ईच n यू विल बी आइट्रेटिंग ओवर इट्स मल्टीपल्स, तो दैट इज लाइक n log n, ठीक है। और फिर रिजल्टिंग स्ट्रिंग से तुम आंसर पता करोगे, वो भी n log n था, ठीक है। तो दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस, मतलब सीक्वेंशियल प्रोसेस थी, राइट, मतलब वन बाय वन कर रहे थे तुम। दैट्स व्हाई योर टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाज n log n, है ना। बट अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि फॉर ईच बटन पुश यू शुड लाइक add the answer to your actual answer, है ना। तो यार आई एम हैविंग अ बैक पेन राइट नाउ by sitting in this chair from so long. Okay. So and also since I got to know कि I have already qualified to round 2, I'm getting no motivation to solve like further problems, because I was thinking कि I should get under 5,000 rank, and that's why I was like competing till now. But since they have already changed the like the criteria, I think it's fine. We can also end it here, but let's give a try for C2 and B2, right? ठीक है, okay. So before that, let's see if we have any new info which is available. So just newbies writing chat, and here, so true, real problem is diversity hiring. Wow. Are you processing the submissions made via clarification during contest, or do you plan to do it? It seems they won't because they did reset the timer and expect you to upload your solutions normally now. Announcement says okay. Okay, I think I should also add a comment. Looks like the criteria to advance to round 2 is also changed from top 5,000 rank to scoring at least 10 points. Looks like the criteria to advanced criteria for round 2, I think I should write for round 2, is changed from getting top 5,000 rank to scoring at least 10 points. That's a new info. I think nobody has discussed this, so I should post a comment regarding this. Okay. So for C2, I think it's fine. I should focus on my sleeping schedule instead of participating further, and I think it's fine. I can like absolve it tomorrow, right? There is no big deal. And it looks like we have already qualified to round 2, so we will be like participating seriously that time.
So it's fine. Thank you, Facebook hacker ka, for wasting my time. That too, like when I should be having sleep. It's fine, guys. Like I did not really enjoy this contest because of its server problems. The questions was good, to be honest. Like I only read the first three problems, so and that too, like I am able to solve only the easier versions. ठीक है, मैं तो difficult version solve भी नहीं कर पाया. But ठीक है, I did not had like मुझे like मज़ा तो नहीं आया इस राउंड में. But I hope कि तुम्हें A, B1 and C1 solutions मेरे जो हैं उससे थोड़ी help मिले. And that's it. Like I think I should wrap it up. So bye. Thanks for watching.